guys, welcome back to my channel. I hope that you all are doing really well. Nykaa पे सेल चली हुई थी, I wanna say 3 weeks ago, and I picked out few things. ये बहुत ही बड़ा haul नहीं होने वाला है, so I thought why not sit down and try all these products with you first hand. So this is gonna be like a haul plus first impressions of few makeup things that I got. I haven't done a makeup haul in like ages. मैंने जितने भी recently नायका haul किए हैं वो सारे ही skin care related है, but this is gonna be a makeup haul. I just ordered 2 things skin care department में, so I will talk about them सबसे पहले, and then we will move on to the makeup part जहाँ पे I will show you the product, we'll apply it, and we'll get to this look. So without any further ado, let's get started. First thing that I picked out is from Minimalist. Now I love their niacinamide 5%. ये है niacinamide 5% and hyaluronic acid 1%. Okay, this is the old bottle that I have और ये पूरी खत्म हो चुकी है. I really would recommend it. If you have redness on your skin, this product is absolutely beautiful for pores. Niacinamide pores के लिए बहुत अच्छा है, oily skin के लिए in general बहुत अच्छा है. So if you have acne, oily prone skin, sensitive skin, redness बहुत होता है, this product is life changing. And you guys, if you guys watch my videos, you would know कि मेरी skin बहुत improve हो गई है पिछले कुछ महीनों में. And this product has been a part of my skincare journey. So ये पुरानी बॉटल थी, मैंने ये ऑर्डर किया and this is the new bottle. तो है but अब ये new packaging है, new packaging dark है, which is how it should be. Like जो भी actives है वो थोड़ी dark bottle में होनी चाहिए. ये glass bottle है तो यूज़ करना स्टार्ट कर लिया. मैं इसको सुबह लगाती हूँ and it is just a beautiful product. If you are somebody who is thinking to get into niacinamide, I would say start with 5% because 5% पे सारी स्टडीज़ हुई है. 10% भी लोग लगाते हैं एंड काफ़ी लोगों को कोई रिएक्शन नहीं होता है, बट कई बार पर्जिंग कॉज हो सकती है 10% पे. सो जस्ट स्टार्ट विथ 5%. ऐसा नहीं है कि 10% है तो दैट विल वर्क बेटर. 5% से स्टार्ट करो, सी हाउ योर स्किन गेट्स ऑन विद इट. आई रियली लव 5%. इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है विच इज़ really good. So got this product. Then the second product that I got is rose water. Now you guys know I'm obsessed with rose water. Deve Herbs का rose water I love that product, okay, and that brand. And then Kama Ayurveda का rose water भी बहुत अच्छा है. तो I just am like मतलब I just want to find more budget friendly items which are good. तो मैंने ये brand देखा, Nature's Tawa. Okay, this is Gulab Jal rose water and I was like okay, let me just pick this out. This is only for 275 rupees. बहुत ही budget friendly है and I thought कि I will test this out. I have been using it and इसका spritzer काफ़ी अच्छा है which is a plus point and it's nice. मतलब अभी 1-2 दिन ही हुए यूज़ किए हुए. I love using toner में rose water. Last year तक I used to use fancy toners but now I love using rose water as my toner. तो दिस इज द सेकेंड स्किन केयर प्रोडक्ट दैट आई गॉट. मेकअप में मैंने सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स लिए बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड दीज 4 आइटम्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट, लेट मी जस्ट बाय देम. सो हम क्या करेंगे, आई विल शो यू द प्रोडक्ट मैंने क्या क्या लिया है एंड वी विल इवन डू लाइक अ फर्स्ट इंप्रेशन. आई एम जस्ट गोना क्रिएट दिस फेस नाउ, सो लेट्स मूव ऑन टू दैट पार्ट. ऑलरेडी मॉइस्चराइजर लगा लिया है, अब हम डायरेक्टली फाउंडेशन लगाइए. मैंने फाउंडेशन गाइज इतने टाइम से नहीं लिया है बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिनिश जो मेरे पास ऑलरेडी है, बट आई वांटेड टू ट्राई दिस फाउंडेशन एवर सिंस ये लॉन्च हुआ है इंडिया में. दिस इज द टू फेस बॉर्न दिस वे फाउंडेशन, बेसिकली एन ऑयल फ्री फाउंडेशन एंड इसका मीडियम टू फुल कवरेज है. दिस फाउंडेशन हैज हाइलुरोनिक एसिड इन इट, इट इवन हैज कोकोनट वाटर and it has alpine rose. This foundation claims that ये बहुत hydrating है face पे, बहुत long wearing है, फोटो फ्रेंडली है एंड या इट जस्ट सेज कि दिस इज बेसिकली मीडियम टू फुल कवरेज बट जो उसकी फिनिश है वो बहुत नेचुरल है. तो वी शैल सी. मैंने ये शेड ऑर्डर किया है नेचुरल बेज. ओके, सो आई लव द पैकेजिंग. इट कम्स इन दिस लवली पिंक पैकेजिंग. दिस इज हाउ द फाउंडेशन लुक्स लाइक. इट कम्स इन दिस ग्लास बॉटल, लुक्स वेरी लग्जोरियस, आई एम नॉट गोना लाई. हैज अ पंप विच इज अमेजिंग. तो व्हाट वी विल डू इज हम एक पंप पहले देखते हैं पूरे फेस पे लगा के और उसके बाद वी कैन गो अहेड. So I'm just taking one pump and you can clearly see ये foundation runny है, it's not very thick. I'm just gonna apply this all over my face. Shade है वो है natural beige and I could have definitely gone एक shade lighter because it is a bit yellow on my skin, but then again I feel कि
I would rather go one shade darker than one shade lighter. ऑनलाइन का यही प्रॉब्लम रहता है गाइज, मतलब अगर आप ऑनलाइन फाउंडेशन लोगे सो यू डोंट नो व्हाट शेड टू बाय. So far I'm just tapping my beauty blender and you can see कि ये बहुत अच्छे से spread हो रहा है स्किन में. It's not matte which I like. First impressions of this foundation is कि ये बहुत ही सुंदर लग रहा है स्किन में. What do you guys think? I would say एक pump has fairly covered, given me a nice coverage. I think so. It looks pretty nice. थोड़ा luminous भी लग रहा है. It's not very luminous, but थोड़ा सा इसमें glow है. It's not like a matte finish. It gives your skin this nice, lovely coverage. I'm gonna go in with one more pump. Okay, half a pump, not full pump, because full pump बहुत ज़्यादा हो जाएगा. I would say कि one pump में आराम से पूरा face cover हो गया था, which is lovely. And coverage इस foundation की actually बहुत अच्छी. Like I get the hype and it's not at all looking cakey on the skin, which is just lovely. मैं इसको ज़्यादा अंडर आई के नीचे नहीं लगा रही हूँ because I have a concealer also. Initially मुझे लग रहा था I could have gone one shade lighter, but I think so it looks fine because मेरा face comparatively light है मेरी body से. I don't have to bring the foundation all the way to my neck, which is nice. It matches really nicely and I love the dewiness that it's giving me. इस foundation का price है 2700 rupees and high coverage में I would say कि if you are thinking to buy this foundation, I would say कि first impressions में I am really liking it and I get the hype behind it. Sale पे ये offer चल रहा था कि you buy one product and you get one product free. तो मैंने सोचा foundation concealer ले लेते हैं because वो बहने हैं and they will just sit nicely on the skin. तो I got the foundation. This is the Too Faced Born This Way का ही ये foundation है. So this is how it looks like. तो ये बहुत similar लग रहा है, right? Now this concealer is a full coverage concealer and अब मुझे इतनी आदत नहीं है full coverage concealer की. Like I love my Maybelline Fit Me concealer, but then high end में I was like, you know what, let me just try it out, let me see कि hype क्या है इसमें. Price बता देती हूँ. Its price है 2000 rupees. Okay, it again comes in this glass a bottle only and I love the size of it. Usually concealers बहुत छोटे से आते हैं. I would say this will last me for like years. तो साथ में भी they look nice. तो मैंने कंसीलर में शेड मंगवाया है न्यूड. इस कंसीलर से हम हल्का सा अंडर आईज को हाईलाइट करेंगे. जस्ट बाय द एप्लीकेशन मैं बता सकती हूँ कि ये कंसीलर काफ़ी हाइड्रेटिंग लग रहा है. आई एम गोना यूज़ माई एल्फ कॉस्मेटिक्स स्पंज. इसमें एक फ्लैट साइड है एंड देन ये पॉइंटी साइड है. इट्स लवली. ये वाला साइड फाउंडेशन के लिए, ये वाला साइड फॉर कंसीलर. सो आई एम जस्ट गोना ब्लेंड दिस नाउ. This has made my under eyes look so damn pretty and it's not even settling under my fine lines, which is great. Now what I will do is, see, जब concealer लगाते हो ना, you have to powder under your eyes because like it will get into the creasing of the eyes and सबके under eyes के नीचे एक दो crease हल्का फुल्का रहता है, so you should always powder it. So I'm just gonna powder it. मैं Laura Mercier का powder ले रही हूँ and मैं उससे अपनी under eye set करूँगी, but always make sure जैसे set करने से पहले एक बारी beauty sponge से जाओ under eye के नीचे. So look up and just tap and then take the product and just set your under eyes. I'm not taking a lot of powder you guys, just हल्का फुल्का powder से अपने आप को थोड़ा सा set कर रही हूँ. हम थोड़े से crazy लग रहे हैं. Dimension सारी face से जा चुकी है. We will bring all of this together. First I'm going to just fill in my brows and then I'll be back. Okay. Okay, eyes अभी थोड़ी सी scary लग रही है because mascara on नहीं है. Next, let's move on to an eye product that I got and I've actually been wearing it. It's this mascara by L'Oreal. Now, iski hype has just been all over the internet and I actually wanted to try this out for myself and I love this mascara. This mascara के पीछे is so worth it. Like, oh my god. You guys know that I have poker straight lashes. मतलब मेरी lashes में there is no volume, but this mascara, guys, if you have straight lashes like me or if you just want volume and you just want कि lashes थोड़ी दिखे, this is it. Guys, my eyes are done and usually मैं इस look के साथ definitely lashes पहनती, but just the fact that this mascara
does wonders. I get the hype now. So definitely would recommend this product. अगर एक चीज़ उठानी है इस haul से, this product, वैसे सारे products are very good, but this one is definitely something that everybody should try. Next, let's move on to the blush. Okay, K Beauty say the only product that I've tried is their foundation, and I've heard so many good things about their blush. This is enriched with mango butter and avocado. It's a matte blush. This is how the packaging looks like. The shade that I got, it's called Tickled Pink. Love the packaging. It's this lovely rose gold sort of a packaging, and पीछे blush का जो color है वो पीछे color है. The color of the blush बहुत ही सुंदर color है. मेरे पास actually ऐसा color है नहीं. Blush में a little goes a long way. Ooh, this is pigmented. Now blush का placement you can see, like if you have fuller cheeks, जैसे मेरे fuller cheeks है तो मैं blush अगर यहाँ से यहाँ तक लगाऊँ मेरे लिए sufficient है. But if you want that illusion of a cheek, then you can apply your blush here. But मुझे personally, because it's so trendy and I love it, तो मैं अपने nose से लेके यहाँ तक लेके जाती हूँ पूरा. If you have texture on your skin, avoid wearing like a shimmery blush. एक matte blush लगाओ. Next product that I got is from Becca Cosmetics. Now Becca shut down हो रहा है, I think so September में, if I'm not wrong. So I wanted to pick out something from Becca because मैंने कुछ नहीं लिया है कभी भी, and I thought okay, I actually wanted the बड़ा size sale पे champagne pop highlighter का, but that was sold out. तो मैंने mini लिया, and I think so mini is also very very cute. I love how cute this is. Might buy a bigger size also, but for now I got this shade. It's called Champagne Pop, and wow, I actually cannot find my highlighter brush, so I'm just gonna use Side's blush ka like Jugaad, and I'm just gonna take this and I'm gonna apply this. Ooh, wow. Highlighter guys इतने टाइम बाद पहन रही हूँ, so I'm just like wow, this actually looks very very pretty. Like I think so if you're a highlighter person, definitely get this. Like this is actually pretty good. I mean मैं इतना highlighter लगाती भी नहीं हूँ, but like looking this viewfinder में, I'm just like damn, it looks nice. So with that you guys, we are done with this video. I really hope that you all enjoyed. बहुत कम items मैंने इस बारी pick की थी, but मैंने जो भी pick किया है, I really wanted to try this from a very long period of time. पहले I was even thinking to buy a lot of skincare, but मेरे पास already बहुत पड़ा हुआ है, so I did not buy a lot of skincare. So yeah guys, I really hope that you all enjoyed the video. So going guys, comment में मुझे बताओ what did you guys pick in the sale, because I would love to know that. Also अगर इनमें से कोई product ऐसा है that you have and you love, वो भी मुझे बताओ. I love you all very much, and I will see you next time. Bye.